All right, good morning, everyone. So, this is our new chapter, uh, which is about the. Excuse me, sir. Hello? Excuse me, सर Yes? सर लास्ट लेक्चर में मेरा एक क्वेश्चन था जो आपने एग्जांपल करवाई थी ना Yes. सर उसमें सेकंड एग्जांपल की समझ नहीं लगी आपने कहा था कि आप दोबारा मुझसे पूछ लेना अगर सेकंड एग्जाम्पल की समझ नहीं आई. जी सर Okay. So, lecture 2021, right? 2021. यस सर Okay. So, which example you could not understand? What is your name? सर अली Ali, which example you could not understand? सर इससे पीछे एक एग्जांपल है पिछली स्लाइड्स पे इससे पिछली, there is no word इससे पिछली. You should tell me lecture number, right? Or the topic at least. सर ये एग्जांपल के अंदर हमने जो है ना सेफ आइटम मेजर करनी थी कि किस साइड पे जो है ना हमारी कोलैप्सेबल ना हो स्ट्रेसिस से So, can you just call me on Teams after this class? Then I will ओके सर definitely be able to follow up. Okay? ओके सर All right. No problem. Okay. So, Ali, can you see the slides, right? यस सर Okay. Thank you. All right. So, previously in previous chapter, we learned about how to calculate the in situ state of stress. That was about the vertical stress, and we learned total stress and then pore pressure, and we deducted pore pressure from total stress to calculate the effective stress. After that, we learned about the seepage stresses, and using the seepage stresses, we calculated the different applications for the sheet pile stability analysis, for the dams, and then we looked on one of the extremely important phenomena of selection of the filter material, and then the design depth of the dam, which was proposed. So in today's lecture, we will not talk about the in situ state of stress. We will talk about another component of the state of stress, which is added stress, external stress. Well, if this is the ground and you construct any building because of this construction, definitely there is a in situ state of stress, which is sigma z, if this is the vertical total stress, plus, okay, there is some added stress due to this construction, so delta sigma z. Now I will call in this chapter and in next chapter and in entire, for example, in next subject of geotechnical engineering, when I use delta sigma z, it means it is the added stress component. Okay, and added stress component means it is the load caused by the external construction or the construction on the ground. For example, if you construct a embankment dam, so definitely there is going to be some additional contribution of the added stresses. Okay, there is a existing pipeline, so you can see over here, which were only having the load of this soil, which is the in situ state of stress. And suppose now you decided to construct a new building which has some stress influence on this already existing underground structure, so you have to perform the stability analysis. So the purpose of this chapter is basically to calculate the external stresses or added stresses component. Okay. So first I will show you just entire understanding of the stresses, in situ stresses, and the added stresses. Then we will talk about few of the practical examples. Then we will see the solution of Bose-Einstein, and there are many other solutions for the vertical point load, for the vertical line load. Then we will see the contribution of these load near some structures, then horizontal line load. Then we will solve for the circular loaded area and rectangular loaded area at different position to calculate the state of stress. So
I believe that in previous chapter you have the understanding of the stresses due to the gravity known as the geostatic stresses, and we only talked about the vertical stresses, and we know what are total stresses, what are the pore water pressures, what are seepage stresses, what are the effective stresses. Then we learned about the hydrostatic, sorry, not seepage stresses over here, okay. Then we learned about the hydrostatic stresses. We looked on the permeability concept. Then we looked on the Laplace equation, and one of the very famous solution of the Laplace equation is the graphical solution to plot the flow nets, flow lines, and equipotential line. Using that, we calculated the distribution of the pore water pressure. And then we looked on the upward seepage stress, and because of the upward seepage stress, the hydraulic gradient increases, and because of the hydraulic gradient increment, the effective stress reduces, and a situation comes when there is a failure. We call that as a heave. So we looked on that practical example. Now, so these all are basically in situ stresses. Okay, either geostatic or the hydrostatic. So something known as the external stress, for example, if you construct bridge, road, dam, building, okay, embankments, anything, then you are going to have, this is the total vertical stress plus this is the added vertical stress due to the construction of this load. So how this is distributed, that's our purpose of this today lecture. There are various solutions: Boussinesq method, Newmark's method, and Westergaard method. So in today lecture we will be only talking about the Boussinesq method, and this is very popular elastic solution, which is I think exact solution. So let us look into the Boussinesq solution. Now, to understand the practical aspect of the added stress, let us consider a site where there is an existing retaining wall. For example, if you see, this is the ground level over here, then there is excavation, this is the ground level, and there is a retaining wall. So this is already constructed. Now, after some time, someone decide to construct this high-rise building like this over here. So definitely this retaining structure, you can understand, if this is the wall, okay, on this wall there will be some stresses which are being already because of the soil, which we will calculate in our next subject of geotechnical engineering. There is an entire chapter of earth pressure, okay. सो ये एक रिटेनिंग वॉल है, इस पे ऑलरेडी सॉइल का प्रेशर लग रहा है. जब आप इसके पास ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इस कंस्ट्रक्शन को अगर मैं कहूँ ये यूडीएल है या लाइन लोड है या पॉइंट लोड है, व्हाटएवर, उस लोड की वजह से अगेन एक और स्ट्रेस इंक्रीज होगी, ये वाली स्ट्रेस इस रिटेनिंग वॉल पे और प्रेशर इंक्रीज होगा. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट एंड वी हैव टू परफॉर्म द स्टेबिलिटी. तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें इस रिटेनिंग वॉल की स्टेबिलिटी एनालिसिस करना है. अदरवाइज ये ना हो कि ये एक्सीड कर जाए, इसकी स्ट्रेंथ से स्ट्रेसेस ज्यादा हो जाए, तो इट विल बी देयर विल बी अ कोलैप्स, देयर विल बी अ फेलियर. सो दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल. There is another example. Consider a site where there is an water oil pipeline. For example, you can see this is a ground level. Below the ground level, there is almost, suppose this is a groundwater table, okay, at 1 meter, then approximately 4 meter, there is a pipeline or sewerage line or oil gas pipeline, okay, anything that is having 2 meter diameter. अब इसके ऊपर आज कौन सी स्ट्रेसेस लग रही हैं टुडे बिफोर एनी कंस्ट्रक्शन? सो देयर इज effective stress, means there is a total stress, there is a pore water pressure, there can be a seepage. But when you decide to construct a building, for example, at any offset, definitely the state of stress is changed over here. There are additional stresses due to the load of this building, so you need to perform the stability analysis. You need to distribute the stress due to this new building, okay, and you need to perform the stability analysis. This was another practical example. Now let us come to the very typical example. For example, the foundation of your house. So you know, okay, this is a footing. For example,
This is the wall, so wall is transforming, so there is a roof slab is transforming load to the wall, and the wall is transforming load to the foundation. So the foundation has some dimensions, suppose 3 meter by 3 meter in plan, okay, and it has some embedment depth, so it is 1.5 meter in the ground. So definitely you need to, the soil at this level has some strength. Okay, so this is the strength of the soil, suppose, and this is the in situ stress plus added stress. Okay, so you have to make sure that the strength is higher than the soil stresses plus the stress of the building. Then you can only have a safe structure, otherwise there will be settlement. This is another example. Okay, this is an example of the earthfill embankment dam. For example, let's assume a Tarbela dam, which you can see is a huge dam. Okay, so you know the unit weight of the, for example, you know the site density, you can calculate the volume, you can calculate the weight, you can calculate the stress. Okay, but that stress you have to transform to the ground. So how to calculate that stress at any load due to this construction, that's what we are going to learn. So this was about the practical application, why we need to study about the added stress. Now let us see point load. For example, if there is a large pylon, for example आपने देखा होगा 11,000 केवी की जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं उनका आपने बहुत बड़ी एक ट्रस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे आप पाइल वो कहते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म, ओके, उसके नीचे एक पॉइंट लोड की तरह उसका वेट लग रहा होता है, इलेक्ट्रिक पोल का जो वेट होता है, ठीक है, तो लेट्स दैट समथिंग इज नोन एज पॉइंट लोड. इसी तरह आपने ऑफशोर विंड टरबाइन, विंड टरबाइंस क्या होते हैं कि जिसके साथ हम there is a if there is a high wind, so you can convert the wind into a electrical energy. Okay, wind turbines, that is also one of the example of the point load. Now अगर कहीं पे point load है और उसको आपने किसी भी depth पे stress calculate करनी है, तो there is a very famous closed form solution known as the Bouzinès 1883. So the assumption is that soil is homogeneous, means if that's a clay, that's entirely a clay. So we हम ये नहीं कंसीडर कर सकते, इसकी assumption ये है कि अगर आपके layered soil है तो आपने उसे assume करना है कि ये homogeneous है. There is a single type of the soil that is present. Then elastic, so the soil response is elastic. Who would explain the definition of elasticity? Elastic क्या होती है कोई चीज? सर जब ओरिजिनल शेप इन कर दे सर, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए सर आफ्टर अनलोडिंग. ओके, यू आर एन इंजीनियर. ओके, सो इंजीनियर की डेफिनेशन इलास्टिक की ये है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ओके, एंड देयर इज अ स्टिफनेस कोएफिशिएंट that is E, which is known as elastic stiffness, which is ratio of stress to strain. Okay, okay. Then isotropic. So isotropic means the property of the soil are same in all direction. Okay, so let us see कि for example if this is the 3D coordinates, so you can see the depth is Z and two horizontal axes are X and Y. So if this is the point where you are your load P is applied, okay, the point of application of the point load is over here. Then you want to calculate the distribution of the added stress component due to this load at some distance X, Y, Z. So means at some depth Z, suppose this is the depth Z, this is the horizontal axis 1, Y location पे ये locate और X location पे ये है. So how to calculate that? These are the formulas to we are not looking how we can drive these formulas because that's right now beyond the scope of the subject.
So these are the Bose-Einstein solution that will be given to you अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, so you have to only understand how to use this. तो इस पॉइंट लोड की वजह से एक्स वाई जी किसी भी कोऑर्डिनेट के ऊपर आपने अगर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, एडिट स्ट्रेस या स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू दिस पॉइंट लोड कैलकुलेट करना है एट एनी डेप्थ at any horizontal distance x, y and depth z. So the vertical stress, this is the vertical stress distribution delta sigma z. So let's look on only that. ये उसके horizontal stress component हैं, but we are not looking into these. We will study these in geotechnical engineering when you have the concept of the horizontal stress, K-nod and everything. So just let's look only on this component, okay? सो P इज द पॉइंट लोड. ये हमें ऑलरेडी पता है कि अगर पाइलॉन है तो वो कितना लोड अप्लाई करेगा, या ऑफशोर विंड टरबाइन है. Z इज द डेप्थ जहां पे हमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है, दैट्स Z. R is basically the radial distance which is equal to x square plus y square, okay, square root of x square plus y square. So x और y आपको कोऑर्डिनेट पता है जहां पे आपने स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और z जो है वो डेप्थ है. सो यू जस्ट इनपुट द वैल्यूज एंड यू कैन कैलकुलेट द एडिट स्ट्रेस कंपोनेंट. नो, आई गिव यू एन एग्जांपल कि सपोज ये एक ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ओके. और जो अगर मैं 2D में इसे करना चाहता हूँ, ओके, और जो इसकी वाई लोकेशन है वो सपोज ये 1 मीटर के ऊपर हम सिर्फ स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हैं, ओके, और एक्स इज आल्सो 1 मीटर और 2 मीटर और 5 मीटर, इट डिपेंड्स आप किस लोकेशन पे कैलकुलेट करना चाहते हैं. लेकिन z के क्रॉस, तो इसमें आप क्या पुट करोगे, r कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वट एवर इज एक्स वाई, यू विल कैलकुलेट स्मॉल r. एंड z कैसे है, आप पहले 1 मीटर रखोगे, इसमें z आपके पास एडिट स्ट्रेस कंपोनेंट आ जाएगा इस लोकेशन के ऊपर, ठीक है, डेल्टा सिग्मा z की वैल्यू आ जाएगी. आप इसके अंदर 2 मीटर रखोगे डेप्थ, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी. आप इसके अंदर 3 मीटर रखोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी. तो एज डेप्थ इंक्रीजेस दिस स्ट्रेस रिड्यूसेस. सो दिस इज समथिंग, जब आप स्ट्रेस प्रोफाइल प्लॉट करोगे तो इट वुड बी मोर क्लियर टू यू. So for now, I just want you to get familiar with this equation and how to use it. Okay. So the practical example मैंने आपको बताया point load की है कि load of an electric pole. So let's look into the line load. Vertical line load को हमने कैसे distribute करना है along depth. So suppose this is a very long brick wall, या कोई भी wall है ये जो construct की हुई है, ठीक है, और आप कैलकुलेट करना चाहते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस वाल से एट एनी डिस्टेंस x. सो y, क्योंकि ये जो दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें वाल इनफिनिट है, इसलिए वी डोंट केयर अबाउट दैट डायमेंशन, ओके, बिकॉज दिस इज अ प्लेन स्ट्रेन कंडीशन. और जिस डेप्थ के ऊपर आप इस लाइन लोड की वजह से स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हैं, सपोज दैट्स z. So let us calculate this delta sigma z. We are not interested in this component, so forget about this. So delta sigma z due to the vertical line load at horizontal distance x and z is, so you need to know the intensity of the line load, which is force per unit unit length, okay, and z is the depth where you want to calculate. X and z are just coordinate, and you can calculate the added stress component delta sigma z. This is how you have to use this formula. Now let us see the horizontal line load. So you can see there is a horizontal line load which is being applied at this location. Now suppose you want to calculate the added vertical stress component at horizontal distance x from the line load and depth z, then you have to use this formula. So you need to know the intensity of the horizontal line load q. So you know x, z, the location where you want to calculate the added stress component delta sigma z. This is how you have to use this particular formula. These all formulas will be given to you if the question is
asked in exam, but you should know when which formula is to be used. ये सब फार्मूला एक फार्मूला शीट के ऊपर एग्जाम में गिवन होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपने सिलेक्ट खुद करना है कि कौन सा फार्मूला यूज करना है. Now let us see this example कि इसके अंदर एक इंक्लाइन लोड है जो 1000 पाउंड पर फीट है और ये लाइन लोड है. Please note this is the inclined line load and you are asked to calculate at x equal to 5 feet and z equal to 4 feet. तो कौन बताएगा कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सर इसके दो कंपोनेंट आएंगे ना, x की डायरेक्शन में और g की डायरेक्शन में. ओके, वेरी गुड. सो क्या होगा मंसूर, आपका नाम मंसूर है ना, राइट? जी सर. सो वर्टिकल कंपोनेंट की क्या वैल्यू होगी, क्या फार्मूला होगा? सर जो हमने अभी पढ़ा है वही होगा सर, वर्टिकल. नो 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 नो, कैन यू रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू वर्टिकल कंपोनेंट? इधर मुझे मंसूर आप बताओ क्या किसके बराबर? सर वो होगा 1000 इनटू वर्टिकल होगा सर cos of 20. Okay, this is right. 1000 cos 20 degree. Okay. Yes sir. And this sir, would be horizontal 1000 sin 20 होगा. sin 20 degree. Okay. Now these are line loads, right? So अब आपको मैंने पीछे बताया कि इसकी वजह से डेल्टा सिग्मा z, ओके, ड्यू टू दिस आप पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर डेल्टा सिग्मा z प्लस डेल्टा सिग्मा z ड्यू टू दिस वर्टिकल लाइन लोड. तो वो ऑलरेडी आपको इक्वेशन मैंने पीछे बताई हैं, ठीक है? यू जस्ट नीड टू यूज दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट एंड यू विल सम अप. एनी क्वेश्चन कि ये मैंने कैसे सॉल्व किया? ऑल राइट, नाउ लेट अस सी अनदर प्रैक्टिकल एग्जांपल कि अगर आप एक बहुत बड़ा सर्कुलर वाटर टैंक या ऑयल टैंक, या अगर आप में से किसी ने देखे हैं, शुगर मिल देखी है या फ्लोर मिल देखी है, तो उसमें बहुत बड़ा एक सर्कुलर सिलोज होते हैं स्टोरेज के, या आप किसी ने पाइप पेट्रोलियम ये जो है रिफाइनरी देखी है, तो उसमें भी यू कैन सी हाउ लार्ज आर दैट. ठीक है? सो इफ दैट आर द फाउंडेशन, दैट मीन्स के फॉर दिस सर्कुलर एरिया द प्रेशर विल बी, यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर, जो भी उसके अंदर फ्लूइड है या सॉलिड है उसको आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आप उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, यूडीएल में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, now if you want to calculate the stress distribution at the center, so please note down, this is the formula for the center. so ये बेसिकली एडिड स्ट्रेस आपने कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बिलो यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया एट सेंटर, नॉट एट कॉर्नर. देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला. अब आप इसमें Q कैसे कैलकुलेट करोगे? Q इज बेसिकली दैट यू कैन कैलकुलेट बाय द डेड वेट है जो उसका जो उसके स्ट्रक्चर का, प्लस जो भी उसके अंदर फिल हुआ है, लिक्विड, फ्लूइड और ग्रेन्स और एनीथिंग. ओके, so the Q you can calculate, that's not big deal. Now capital R is the radius of your foundation, radius of your circular structure, which is again a dimension that you already know. Z is the depth. For example, if you want to calculate the added stress component at this depth, this depth, this depth, any depth, you can insert the value of Z. So this is how you can calculate the vertical added stress due to uniformly loaded circular area at center. Now let's see if you want to calculate at some corner. Okay, suppose this location. Then the added stress vertical component will be equal to the intensity or the UDL of the circular footing into A dash plus B dash. Now let us see how to calculate A dash, B dash. There are tables which will be given to you. So these are the tables that you have to use to calculate A dash and B dash.
Okay, if this question comes in exam, you will be given these tables. Now for your geometry, so a capital R is the you can get from the geometry of your drawing of your foundation or structure. Small r is the distance at which horizontal plane distance at which you want to calculate the stress distribution. For example, आप इस लोकेशन पे कैलकुलेट करना चाहते हो, आप इस लोकेशन पे कैलकुलेट करना चाहते हो, आप इस पे अदर देन सेंटर, या यू वांटेड टू कैलकुलेट द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट दिस horizontal and this vertical. So the z will be this and r will be this. So you can calculate z by r and r by r. Okay, so using z by r and r by r, okay, suppose your small r by capital R is 0.2 and your z by r is 1. It means your a dash, you are going to insert this value of a dash over here. Similarly, you are going to calculate the b dash. Any question related to this slide, that how we are going to calculate this at its vertical stress below the circular tank at any location other than center using these tables? सर ये स्मॉल आर क्या शो कर रहा है? स्मॉल आर वो डिस्टेंस है सेंटर से जहां पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वर्टिकल स्ट्रेस. सर ये कैपिटल आर की रेंज में होगा सर? नहीं, ये बाहर भी हो सकता है और विद इन भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है. सही सर, थैंक यू सर. ओके, ऑलराइट. ओके, सो let us see another example कि एक structural foundation है. For example, this is the foundation of a structure which has some length and width. ये square भी हो सकती है, rectangular भी हो सकती है. If L is equal to B, B और L अगर बराबर हो जाए तो square, so it doesn't matter. And if you want to calculate the vertical stress at corner, vertical added stress due to this structure at corners, again please note at corner का meanings ये है, यहाँ पे आप calculate कर सकते हैं, यहाँ पे calculate कर सकते हैं, यहाँ पे calculate कर सकते हैं, या यहाँ पे. We are not talking about any other point. Okay, तो let us see how to calculate that. तो इसका फार्मूला है कि डेल्टा z इज इक्वल टू QI3. Q तो होगा जो इंटेंसिटी है, जो लोड है, जो UDL है, या जो भी आपकी स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर का लोड है, दैट विल बी गिवन टू यू, और यू कैन कैलकुलेट, दैट्स नॉट बिग डील. I3 is known as the influence factor. Okay, influence factor. Now how to calculate these influence factor? So आपको ये पता है कि आपकी फाउंडेशन की डायमेंशन क्या है, L क्या है और B क्या है, एंड यू आल्सो नो कि एट व्हाट लोकेशन यू वांट टू कैलकुलेट द वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन Z, यानी कि किस डेप्थ पे आपको कैलकुलेट करना है. तो ये तीन चीजें तो आपको पता है. ओके, सो फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द स्मॉल m विच इज इक्वल टू कैपिटल B विड्थ ऑफ द फुटिंग डिवाइडेड बाय Z, वो डेप्थ जहां पे आप एडिड वर्टिकल स्ट्रेस का कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं. एंड स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल L, जो लेंथ है फुटिंग की या फाउंडेशन की डिवाइडेड बाय Z. सो इफ यू नो m एंड n, which is the function of the dimension and the depth at which you want to calculate the added stress component, you have to use this chart. ये चार्ट कैसे यूज करेंगे? You can see कि this axis is n, also this axis is n, this axis is n. आपने कंफ्यूज नहीं होना. सपोज आपकी वैल्यू 1 है, ओके, सपोज योर वैल्यू इज 1, सो इट मींस के दिस इज योर लाइन, सो यू विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम हियर. एंड सपोज योर m की वैल्यू है 0.3, सो इट मींस के दिस इज द m 0.3 वाली कर्व ये है, ओके, and so there it is intersecting. You will draw a horizontal line, so it means your influence factor I3 is 0.08. So you will multiply Q by 0.08. So see how you are normalizing the horizontal dimension by Z at which you want to calculate the vertical stress distribution, and how you calculated the
IZ are the influence factor. Any question related to this particular sketch? And please note, this is only for corner. Okay. Now let us see for same problem जो हमारा previously था कि center पे कैसे calculate करेंगे. Okay. So for center, again the added stress at center due to the rectangular loaded uniformly distributed loaded area is equal to the intensity multiplied by IC. IC is basically the influence factor at center. Okay. Now you have to calculate M and N or M1 and N1. So which M1 is equal to capital L by B. You already know the dimension of your foundation. You can calculate that. But the definition of N1 is Z divided by capital B by 2. So 2Z by B. So again M और N किस चीज का है जो ऑलरेडी आपको पता है, वो डेप्थ जहां पे आपको स्ट्रेस निकालनी है या वो डायमेंशन जिसकी आपको स्ट्रेसेस निकालनी है. दिस इज फॉर सेंटर. So आप N1 का टेबल, suppose your N1 is 1, okay, and your M1 is 2. So you are going to select value of 0.8 and you will multiply with the Q to calculate the vertical added stress due to the rectangular loaded area at center. Please note कि अगर कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू 1.5 आ जाती है, so you have to perform the interpolation, or you should know how to perform linear interpolation. Okay. Any question related to this slide where I have shown you how to calculate the added vertical stress component due to the rectangular loaded area at center? All right. Okay, so if I summarize today's lecture, I have shown you various solutions in terms of equations, in terms of tables, in terms of chart to calculate the vertical stress component at any location. And we also look on the solution of the Boussinesq, which is based on the theory of elasticity, homogeneous soil and isotropic. अच्छा, ये आपने इसलिए याद रखना है कि अक्सर CNW या वापडा के एंट्री टेस्ट जो टेस्ट होते हैं जॉब के, उनके अंदर वो पूछते हैं कि बोजिनेस्क सॉल्यूशन की assumption A, theory of elasticity B, homogeneous 3, C, isotropic D, all of these. So you should know these assumptions, okay? And then in general soil deposits are not homogeneous. हमें पता है कि practically soil deposit जो होते हैं वो तो कभी clay आई, कभी sand आई, कभी gravel आया. So there are alternative layers. But it has been reported कि जो elastic solution, ये जो भी हमने पीछे पढ़े हैं, और जो actual measured stresses है, उनका difference सिर्फ 25 to 30% है. So it means कि these are very accurate. So this is an example that I want every one of you to solve. Now see, you have to calculate the added vertical stress at point A, point B, point C due to this rectangular area. Now you can see कि यहाँ पे आपने कौन सा solution लगाना है, यहाँ पे कौन सा लगाना है और यहाँ पे कौन सा लगाना है. Okay, so this is something I leave on you. And the intensity or the load, this is the load, okay? So Q, I don't know, is equal to capital Q by A, or you simply can use it. So please look into the textbook. If still you cannot solve it, I'm here to give you the solution. Any question related to the entire lecture? Yes. सर ये जो हमने मतलब लोड लिए इस केस में ना, तो ये सारे डेड लोड है. अब अगर हमारे पास मतलब वाइन टरबाइन इस तरह, तो वाइन भी, उसका प्रेशर भी तो मतलब आएगा. Can you okay, please first can you learn how to speak in front of microphone? So सॉरी सर. yes. सर मतलब जो यहाँ पे हमने जो लोड्स पढ़े ना क्यों, तो ये मतलब डेड वेट है या लोड है. तो अगर हमारे पास मतलब वाइन टरबाइन हो तो उस पे तो मतलब जो एयर का प्रेशर हो वाइन का, वो भी मतलब लगेगा ना. Okay, first of all, these are not dynamic load. Okay, these are not dynamic load, these are static load.
So dynamic load is a graduate course. That's not undergrad, so you should not apply this solution for the dynamic load. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Any other question? सर ये रेक्टेंगुलर के लिए जो हमने इक्वेशन लिखी है सर, एक कॉर्नर के लिए लिखी, दूसरी सेंटर के लिए, तो सर अगर इनके दरमियान के रेंज में कोई आ जाए तो फिर हम इन दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं या कोई नहीं होगा सर? Well, this is something you have to figure out. I really want you to do some critical thinking. How to, so you know the middle, you know the corner. You have to look into the lecture how to calculate at other location. Definitely, I will provide the solution, but I leave on you to think about it and try to solve. Okay. Okay, sir. Any other question? All right, so we are done with today lecture, and please try to practice this. Try to practice example from the B.M. Das or Muni Buddha's book. So I leave on you, and if there is any question, I'm happy to take that. Okay, have a good day. Sir ji.